So, hello, my dear lovely audience and English learners. Welcome to this tiny video on this channel, Fluent Odisha. So, this is me, Rudra Dharwa. So, guys, today I have brought very few words which we repeatedly use in our English language and which sounds very dull. तो आज मु किछि एमती वर्ड्स आनिचे जो वर्ड्स गुडी को के तमर इंग्लिश को बहुत इंप्रेसिव कर दबो जेमती कि माने आमे हमर पाखरे किछि जो लिमिटेड वर्ड्स अछि से वर्ड्स गुडी को आमे ओवर एंड ओवर यूज करि थाउ जा द्वारा कि से गुडी को बहुत डल लागि था डल माने कोन बोरिंग बोरिंग रो तार अपोजिट माने तार सिरोनिम वर्ड डल तो तमे भी जेते बेले भी तमरो इंग्लिश वीडियोस गुडी को देखो YouTube रे से माने बहुत सिमिलर वर्ड्स गुडी को यूज करन जेमती कि बैड यूज करिवेनी happy यूज करिवेनी ता बदले happy बदले delighted यूज करिवे बैड बदले awful यूज करिवे या horrible यूज करिवे तो बहुत एमती सिनोनिम्स अछि जुगुडे कि हमें यूज करिक ना बहुत इफेक्टिव इंग्लिश कहि परिबा आ लोकन को हमें एंगेज करि परिबा माने अट्रैक्ट करि परिबा हम इंग्लिश रे वी कैन अट्रैक्ट पीपल इन आवर इंग्लिश स्पीकिंग तो वीडियोटा बहुत टाइनी ओटे टाइनी माने बहुत छोट ओटे बेसी लंबा करिया को चाहनी जेते शीघ्र ही परिबो सेते शीघ्र मु ए केतरा आनिछि 10टा वर्ड्स आनिछि ता सहित एमानकर सिनोनिम्स along with examples so watch this video till the end and grab all of these words in your English and make it smoother fluent and very effective so without any further delay let's dive into the video and let's learn guys so तमर प्रथम वर्ड के होची ब्यूटीफुल माने सुंदर यू आर लुकिंग ब्यूटीफुल आ ब्यूटीफुल हेले काई कहबा ता बदले हम यूज करबा गॉर्जियस स्टनिंग लवली कोड एग्जांपल भी दिछि देखि पारिबो शी लुक्स गॉर्जियस इन दैट ड्रेस शी लुक्स गॉर्जियस इन दैट ड्रेस विथ लोगे माने से ड्रेस रे बहुत बोल देखे से इन ही लगबो शी लुक्स गॉर्जियस इन दैट ड्रेस शी लुक्स ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल तो समझते हो ता बदले गॉर्जियस हो ता तो स्टनिंग ओ माय गॉड शी वाज लुकिंग स्टनिंग टुडे they have a lovely pet they have a lovely pet means adorable then our second word is good माने भलो समस्त जानिचो hey how are you doing yeah I'm good it's very dull guys to hear and बहुत boring लागछ yeah I'm good but instead of good we can use this I'm excellent एरा आउट के एम्फसाइज करूची जेते हम खाली गुड को हां ठीक ठाक जस्ट एम्प्टी होछ बट जितु या आई एम एक्सीलेंट इट मींस इट इज मच बेटर वे टू एक्सप्रेस आवर इमोशन या आई एम एक्सीलेंट आई एम वंडरफुल hey how have you been yeah I'm wonderful it sounds pretty good guys then fantastic yeah she's fantastic then हमर थर्ड वर्ड होची बैड माने खराब जानिचो एक how was your performance it was really bad it doesn't sound good guys so to make it smoother and advanced we need to use any other synonyms like hey how was your match or how was your performance it was really terrible it was awful it was horrible in this way you can make or you can reply or you can speak you can use in your English language guys instead of bad so hope you are enjoying watching this video देखो मु तीनटा एडी देछि बट मु अलगा वे रे मो निजो वे रे मु एग्जांपल्स दोछि ओके तुम चाहिबो त एडी भी देखि पारिबो याना तुम पुनी परे कन्फ्यूज हो जे ए वर्ड्स गुडी पुनी यूज करिया केमती तो सेति पय तीन तीनटे इंग्लिश रो सेंटेंस वीडियो रखिछि जो द्वारा कि तुमको हेल्प हो माने गुटे इजी हो बुझिया पय तापर हमर 4 नंबर वर्ड होछि बड़ बिग how big that mountain is does it sound impressive that is a big mountain but in this case if I use that was a huge mountain okay that was a colossal mountain yeah tome koi paribo eta yeah the building was really enormous eta kemti lauje oh there was a big building not at all so just skip it huge massive or enormous ए वर्ड गुडी यूज कर देखो बहुत सिनोनिम्स अछि किंतु बहुत किछि ना किछि सिखिबा ही भलो बहुत सिखिते माइंड रे थेबो किंतु ता यूज करि पार नथिबो व्हाट इज द यूज ऑफ रिमेंबरिंग दोस ऑल वर्ड्स गाइस इफ वी आर नॉट एबल टू यूज देम इन दैट प्रॉपर टाइम तो सेति पई बहुत किछि कम माने रखो जोडा कि तमे यूज करि परिबा जोटा हमें माने इजी लागु हम यूज करिया पई ओके तो
big ପାଇଁ ତମେ huge use କରିବ, massive use କରିବ, enormous କହି ପାରିବ. Alright, so now let's move on to our fifth number of word which is small. Small ମାନେ କ'ଣ? ଛୋଟ. ତାହା କେତେ ବଡ଼ ଥିଲା? How big was that? No, that was not huge by the way, but very tiny, very petite. Okay, tiny, petite, or little. At petite मैं mention करने, but yeah, लिखिए. That was looking very little. I have a tiny thing. I have a very tiny thing. I saw a little English speaker. Instead of saying I saw a small English speaker, just say guys, make it more impressive. I saw a little English speaker. तापरे our 6 number what होची happy. Hey, how are you? Hey, have you been? Yeah, I'm happy. What? You're happy? Are you not delighted? Are you not ecstatic? Are you not joyful? What are you saying? You are only happy. Not hey, dude. This is not a better way to respond to that how are you question. So just say, I'm delighted. Hey, how are you doing? Yeah, I'm delighted. I'm joyful. I'm thrilled today. But you know why? Today I went to the market and there I saw a person and she was really looking stunning. And the moment I saw her, I was thrilled. In this way, just express your emotion, guys, in different ways, in various ways to impress people. So now our next and seventh number of word is sad. Hey dude, so how are you doing? And how was your day? Yeah, it was really sad. What? Sad? What the word you are using, dude? Just remove this. Don't you know English properly? Let me teach you some words. Instead of saying sad, just say I'm upset. Hey dude, how are you? Yeah, I'm upset. What? You are upset? What's wrong with you? What happened? I'm with you, but you are upset. You are upset. Not at all. So our next what is your number fast. Sigra. How fast do you run? What? Fast? What the what? This is I don't know. This is very common word, and I don't remember such type of common word. So what you don't know? Just you guys, if you don't know other ways to say fast, then I have written here: quick, rapid, swift. He gave me a quick reply to my question. Instead of saying he gave me a fast answer, he gave me a fast reply. Rapid. Oh my god, it was a really rapid question. I could not answer of that as well. What? You could not give a rapid question answer? Wow. Swift. His legs are very swift in football because you must have seen some players. Their legs are very swift, guys. मतलब तुम निश्चय देखिथिबो किछि लोक माने प्लेयर्स मानको किछि तरह बहुत प्लेयर्स मानको ताकर जो लेग्स थाय ना फुटबॉल बहुत फास्ट थाय तो इंस्टेड ऑफ सेइंग फास्ट तुम यूज करि पायो स्विफ्ट ओ माय गॉड मेसी's legs are very swift तापर हमर 9 नंबर व्हाट हेउचे स्लो स्लो माने सुस्त बा धीरटी गोटे वर्ड लिखि दिछि स्लगिश ओके लेथार्जिक भी कहि पारिबो अछि वर्ड छुटे बट गोटे एटी लगे स्लगिश why you people are so sluggish in learning English? Why you people are so sluggish in playing football? Don't you have that curiosity, that enthusiasm to play and to learn it? I have. I'm not a sluggish person. Okay, in this way. तापरे हमर 10 नंबर जोड़ा के बहुत इजी और frequently यूज करू hot गर्म. Oh my god, I feel very hot in the summer season. Instead of saying hot, just say guys, scorching. It is very scorching outside today. So it's very challenging. It's out of the question to go outside. Don't go. It's very scorching. Okay. गर्म पाई तमे hot यूज करने ता सहित तमे माने ता बदले scorching यूज करो. तापरे हमर 11 नंबर वाटी होची cold माने ठंडा जानिचो सेठी तमे freezing यूज करि पारिबो. The weather was freezing. The water was icy and freezing. I could not hold in my hand as well. So guys, these were the words that I brought here today to make your English much better than this. तो आशा करछि वीडियो भल लागिथिबो और नवा किछि शिक्षा को मिलिथिबो तो मुटे अलग अलग वे रे मोर इंग्लिश को एक्सप्रेस करिया को ट्राई करली गाइस देखो एते तो इजी ने हेइ न थाए हमर सिनोनिम्स को यूज करिया पई बट हो तो हम जदि प्रैक्टिस करियो ना डेली लाइफ रे प्रैक्टिस करिया हमरे तबे जानिथिबो हमर केमति फ्रेंड्स नांदी बट निजे प्रैक्टिस करियो गाइस मन को एटी लिखाइ छि गोटे ब्यूटीफुल सिनोनिम्स तो जानलो गोर्जियस और स्टनिंग और लवली ओके तबे निजे को निजे क्वेश्चन करो हे हाउ इज शी लुकिंग
she is looking stunning, she is looking stunning. निजे निजे को क्वेश्चन करो, निजे आंसर दियो कानी यार याठवा बेटर हुए आ आम पाखरे नाही जा द्वारा कि हमें प्रैक्टिस करके इंप्रूव करबा गाइस। तो यूज करो ये सिनोनिम्स गुड़ा को। आउ देखो तुम जदि नुआ जिनस किसी वीडियो रे सिखिछ निहाती कमेंट करो, कानी तुम कमेंट मते मोटिवेट करे आ वीडियो आनिया पे। आउ तो वीडियो जदि इन्फॉर्मेटिव आ यूजफुल हेतिबो तो निहाती गोटे लाइक करिवो। आ जदि चैनल तुम नुआ अछ तो चैनल को सब्सक्राइब करिवो, जो द्वारा कि तुम इंग्लिश टा आउ टिके डेवलप इंप्रूव हे परिवो गाइस। सो थैंक यू सो मच फॉर टुडे, हैव ए नाइस डे गाइस।